That's why I told you that Sumita is not good actually. I don't know why the language is too complex. Arav, what I can do is I'll provide you Preeti Arora's material, okay? If you say I'll just provide you the questions and the solved ones, or if you will ask me for the entire material, I'll do this entire material PDF for you. Uh, that book is quite good, Preeti Arora. I won't say that buy a new one, but since I have it, I'll share it with you, okay? Whatever is important, and I do have other study material as well in soft, so I'll share that also. Is it okay? There is a Yes, sir. separate PDF I have. I need to search for it. It had all the questions expected from this revision tour. So it has all the important questions from the class 11th topics. So you need not worry about it. Just share the screen and let's carry on with our method to read CSV today. And then perhaps we'll try a beautiful question. I'm telling you, the questions of file handling will actually provide you the real taste of what a development is. So, looking forward to the classes. Just open your okay, where were we? Need not open a new one, we can just continue in the same. We better do it in same .py. I believe it was open. Okay. Yes, this is the one. Let's just let's just go down. Yeah. So today let's write a method to read the CSV file which we have, you know. It would be better if you just do it above write CSV, so that's the way to go. Okay. I mean, write CSV, read CSV, both the function calls will lie after the function definitions or the function declaration, whatever you want to call. Okay, great. So we have to open the file first of all. We will not open it in binary mode, so we'll just go for R. Now we have to make a writer object, just like we have made a writer object in the function to write into the CSV file. Now we'll make a reader object. RO equals to CSV dot reader of F. Again, you can take any variable name or object for this, but just as a standard, we are choosing RO. Great. Now, the next step, since we do not have a direct method to read from the CSV file, the best way is that just check when you open this reader. I would like you to go back and remove parenthesis close and F and open the parenthesis again. Is it giving you any prompt as in what does this reader function does?
Yeah, now open it and just wait for some time. I mean, just do a backspace, remove the parenthesis, just open the parenthesis, remove both the parentheses, remove this one as well, and now open and wait. Is there any yellow box coming? Just open the parenthesis. Okay, open the parenthesis. No, sir. Just open it. You are opening and closing it again. Okay, I'm open. No, no, no. Just go back. Go back. Shift 9. Okay, it's not Yes. giving us any prompt for now. It's okay. So it returns it returns the data we have in CSV file in form of a stream. Okay, you can also call it a sequence. So since we are getting it in form of a sequence, ordered, unordered doesn't matter for now, but we are getting all of our data in form of a sequence. So the thing is, whenever you have a sequence and suppose you want to show what does that sequence has in store for you, so you always can use a for loop over it. You can iterate over that sequence and you can print the uh, value. So let's try to do it. Now you can parenthesis, you can open the parenthesis, close it, pass f in it. So for I in arrow, let's try to print I. For I in arrow, let's see what, yeah, just call read CSV. You can comment out write CSV. I don't want you to write data again. Let's see. Okay, let's go. It will return the records. Should return the records. I believe the file is empty then. Is it? Is it empty, Arav? ये सर इसमें मैं डेटा इनपुट करना था, हमने दूसरा फंक्शन बनाया था, मतलब हाँ राइट के अंदर. Okay, just show me the code. So if you want, you can like write the data first in rf.csv and then try to read it because it does not have anything, I believe. Did you also display, or did just show me the रीड code? भी कर. I believe there were both function calls present. That's why it read the data as well. No problem. Cool. Now what I want you to do is just check one more thing, Araf. Uh, just scroll up and in your write CSV function where you added this new line parameter, just remove it and try to look at the output. What kind of output it gives in Python if we don't have this new line character parameter. I'm sorry. Just run the code.
Okay, great. So can you see that empty list right after each tuple, each row actually, Yes, sir. which since we passed it as a list, that is why it's showing us in form of the that same structure. But can you notice that empty list? Why are we getting this empty list, Arav? सर बिकॉज न्यू लाइन कैरेक्टर जो होता है वो एम्प्टी स्पेस को काट के एग्जैक्ट उसके बाद ही लाइन लिस्ट को प्रिंट करा देता है, बट अब हमने उसे हटा दिया तो वो Yeah. गैप्स में दे रहा है. So मुझे लॉजिक नहीं पता क्यों yeah. देगा So उसके. so the exact reason why we are getting this empty list is because we were getting this empty line right after each row, or we can say we were getting a space of one line after each row. That's why I'm getting this empty list, and that is the reason why we added this new line character. Now there are two things, there are two ways you can override it. One we saw in write function. Now today let's try to do something in read function. Like while reading, it's okay if it is there in your file. Let's suppose in your Excel file, you opened your Excel file and you saw that there is space of one line. It's okay. Now suppose you do not have rights to change the write function, but you have the rights to read it in any way possible you want to read it. So what you can do now is, suppose you do not have rights to edit in write CSV, but you have chance to edit in read CSV. So let's go to read CSV and try to put something. Just like we did new line in write CSV, you can also read while passing new line character, new line parameter. I don't know why I'm saying character again. It's parameter. So pass a new line parameter in open function where you have passed the mode as read mode. Yeah, and this time we have to write carriage return. You know new line will be in lowercase, so just don't try a new thing. It will be the same. New line equals to, it will be backslash r. Let's try to do it using backslash n. Okay, just do it backslash n, backslash n. Now do not write the data, just read. So just call read function. You can comment out write CSV function call. Just run the board. सर पहले क्यों, मैं भूल गया पूछना ही, पहले क्यों नहीं चला था? पहले भी डेटा सेव था ना, मैं करा Uh, था पहले भी सेव. yeah, that's why I said I don't think the file was there. Maybe you have deleted it, or maybe you were trying something out and you have removed it. There was no data actually. That was the only reason why it didn't work. That's why I asked you, did you remove the data or something? Okay, so did you notice, even though you have, now you can open your rf.csv, you will find a space of one line after each row or tuple in the spreadsheet, but while reading, you removed that empty list you were getting on the output, right? So this way also you can work out. So you must know both the methods. Now there is one more thing I would like to tell you today, and then after it, perhaps we'll move on to the question. Are you free on Sunday, Arav? It'll be good if. यस सर. Okay, cool. Let me know the timing whenever you are available. Keep it after 10. Okay, after 10, like 11. It could be 12, or it can also be in afternoon, but not early morning because. ओके सर. सर आफ्टरनून में नहीं. And then when are you free? ये मतलब मैं पूछ रहा था, आपने क्या बोला अभी? Yes, after 10, at any time you can schedule it till 8 at night. ओके सर.
Uh, so you notice that it had space of one line, but now since you have tried to override it using this new line parameter, so it didn't show up. Cool. Now let's try to know about one more parameter, and that parameter is certainly going to be passed into this. लाइन रीड मोड में Hanji, what are you saying? से हटना नहीं चाहिए था वो गैप. Yeah, so the thing is, see, Arav, just try to listen to what I'm saying. While reading, you didn't pass new line parameter. Okay, you didn't try to do anything at all to remove this line. That's why by default it does give this particular space, right? Now this time what you did, suppose I took all the rights from you to change my code, as in the code that you wrote to write into the CSV file. I took all the rights from you to edit it, let's suppose. Now you have all the rights to just edit read function and try something out while reading the file back into your Python shell, एंड यू हैव ऑल द राइट्स टू मेक सम चेंजेस कि वो स्पेस वहाँ पे रिफ्लेक्ट ना हो. वो स्पेस वहाँ पे रिफ्लेक्ट कैसे होता है? यू सॉ इट, इट रिफ्लेक्ट्स इन फॉर्म ऑफ अ an empty list, right? So now since you cannot edit in write CSV, you thought of something, you thought of a way out. So what you did, you passed the same parameter while reading, and you पास्ट आपने बताया पाइथन को कि भाई न्यू लाइन पड़ी हुई है और उसकी वैल्यू ये रहने वाली है, तो उसको आप ओवरराइट कर देना. ठीक है, उसको शो मत करो मेरे आउटपुट में. सो यू डिड इट दिस टाइम इन रीड while reading the file. You got it? Yes, sir. Okay. So now let's try to would you like to explain it to me once more, what we did in this? सर टाइम मोड में वो ओवरराइट कर देगा और रीड में वो नहीं कर रहा. मतलब मैं तो पढ़ूंगा फिर से न्यू लाइन मुझे रिवाइज करना है फिर मैं Okay, फिर let समझ me लूंगा. explain it to you once more in a very simple language. ठीक है, मैंने सबसे पहले हमने सीखा था कि भाई हम राइट कैसे करते हैं. ठीक है, हमने राइट कर दिया, हमने फाइल खोल के देखा कि भाई स्पेस आ रहा है वन लाइन का. फिर दूसरी बार आपने क्या किया, एक तरीका आपने निकाला, आपको एक तरीका पता चला कि अगर मैं न्यू लाइन पैरामीटर पास कर दूँ ना ओपन फंक्शन में, तो वो मैं स्पेस हटा सकता हूँ. ठीक है भाई, हटा दिया आपने, वेरी गुड. नाउ यू नो दैट वे कि आप हटा सकते हो वाइल राइटिंग. इतना क्लियर है आपको आरव? यस सर. अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं. सपोज आपने राइट तो नॉर्मल वे में ही किया जहाँ पे स्पेस आता है एक लाइन का. ठीक है, यू कैन ऑल्सो सी दैट इन योर फाइल. आपके सामने अभी फाइल खुली भी हुई है. ठीक है, इसमें स्पेस आ रहा है. अब मैंने क्या किया, मैंने बोला आरव राइट फंक्शन में आप कोई भी चेंजेस नहीं करोगे, लेकिन आप रीड कर सकते हो, जैसे मर्जी चाहो रीड करो, लेकिन मेरे को वो एम्प्टी लिस्ट हटा के दिखा दो वहाँ से. तो उसके लिए भी आपको एक तरीका बताया गया आज कि अगर आप रीड करते हुए भी न्यू लाइन पैरामीटर पास कर दो और उसकी ये वैल्यू रख दो \r और \n, तो वो ओवरराइड कर सकती है आउटपुट में. आपको वो एम्प्टी लिस्ट शो नहीं होगी. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay, now let's also learn about this one more parameter I would like to tell you. Now this we have to pass inside writer function. Gorang, I would like you to switch on your camera, and you joined in late again. Anyway, sorry sir for the late sir. We are just. It's okay. So yeah, Gorang, we also have a class on Sunday. Okay, so Saturday to hogi. Sunday we just plan out a time along with Arav on the group itself. So Arav, what I want you to do is, अभी आप एक नई फाइल बनाओ. आपकी वाली फाइल तो पड़ी हुई है, तो arav2.csv कर दो इसको, जो मैं अब बनवाने वाला हूँ आपसे. सेम चीज़ें रहेंगी, बस एक चेंज करना है हमको. नहीं 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 नहीं, we don't have to make a new script in the same file. We will create a new CSV actually. So I just wanted to do arav2.csv.
बेसिकली आपकी एक नई फाइल हो जाएगी, उसमें कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर रहे हैं। राइटर csv.writer जहां आपने लिखा है आरव, where did you write csv.writer आरव? Yeah, right there. So next to your file object, which is f, pass a delimiter. What happens, Arav? I told you in CSV files, all the values are separated by comma by default. If you want, you can change this delimiter. Now, what is delimiter in programming? Suppose you have three boys, let's say, okay, you have three of your friends. मैं कह रहा हूँ आरव इन तीनों अपने फ्रेंड्स को ना सेपरेट कर दो। तो आपने क्या किया, आप ओके सर, आई ट्राई, आप एक बोर्ड लेके आए, तीनों के बीच में दो बोर्ड लगा दिया तो तीनों सेपरेट हो गए। तो ये जो बोर्ड आपने बीच में लगाया है ना उन इंडिविजुअल्स को सेपरेट करने के लिए, इसको प्रोग्रामिंग में डीलिमिटर बोला जाता है। तो अगर प्रोग्रामिंग की भाषा में बात करें तो हमने नोटपैड की फाइल खोल के देखी थी, उसमें जो वैल्यूज़ पड़ी हुई थी वो कॉमा से सेपरेटेड थी उस दिन। आप चाहो तो उसको, उस कॉमा को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो the two values the two values are always, if they are separated by a delimiter. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? what is a delimiter if I ask you? Yeah, so delimiter is an entity which helps us to separate two values in programming. ऐसे समझ सकते हो आप इसको, ठीक है, कि अगर दो वैल्यूज़ को मुझे एक दूसरे से सेपरेट करना है तो मैं डीलिमिटर यूज़ करता हूँ, उससे वो सेपरेट हो सकती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने सामने ना एक लिस्ट बनाई हुई है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। क्या आप दोनों मुझे बता सकते हो इस लिस्ट के अंदर क्या कोई डीलिमिटर यूज हुआ है? Yes, sir, comma. Very good, very good. So you understood the concept what is a delimiter. Similarly, you can change this delimiter in your CSV files. By default it is a comma separated value, but you can change the delimiter from comma to some other delimiter, let's say at the rate symbol or any other thing. Let's try to do it in writer function. Just pass one parameter right after f delimiter equals to जो भी आप कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर पास करना चाहते हो to separate the values. You can just separate delimiter yeah, that's the spelling, equals to at the rate, let's say. So Yes, सर मतलब कि जो सिस्टम है वो हमारे लैंग्वेज डिलिमिटर समझेगा? yes, absolutely, गौरांग। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है गौरांग आपने। आरव, जस्ट डोंट डू एनीथिंग, जस्ट वेट। सो जब भी आपको किन्हीं दो चीज़ों को सिस्टम के अंदर सेपरेट करना है तो वो होता ही थ्रू डीलिमिटर है। ओके, तो जो ये वर्ड है ना डीलिमिटर, ये इन फॉर्म ऑफ एन इंस्ट्रक्शन आपकी मशीन को ये बताएगा कि अच्छा आप दो चीज़ों को सेपरेट करने की बात कर रहे हो, मैं समझ गया। आप समझे? जो आपकी मशीन है वो सेपरेटर नहीं, एक तो सेपरेटर पैरामीटर होता है, SCP हम प्रिंट फंक्शन में पास करते थे, वो हम किसी दिन देखेंगे, पहले मैंने आपको बताया हुआ है। ऐसे ही CSV के अंदर या कुछ सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम्स के अंदर जब आप डीलिमिटर जैसी चीज़ लिख रहे हो तो वो किस फॉर्म में लिख रहे हो? हाई लेवल लैंग्वेज की फॉर्म में लिख रहे हो, एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज की फॉर्म में लिख रहे हो। तो जब आपने डीलिमिटर शब्द लिखा ना और मशीन के पास वो गया तो वो उसको ट्रांसलेट कर रहा है, अच्छा मतलब आप सेपरेट करने की बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, मैं समझ गया। समझ रहे हो आप? लेकिन सर मतलब कि इसके और सेपरेटर के जो फंक्शन है उसके बीच में कोई डिफरेंस होता है कि कहाँ पे हम डिलिमिटर यूज कर सकते हैं? आई एम टेलिंग यू। सो डीलिमिटर आपको पता है आप कहाँ पे यूज कर सकते हो गौरांग? यू कैन यूज इट इन राइटर फंक्शन इन CSV, ठीक है। और अभी मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, सेपरेटर आप कहाँ पे यूज करते हो? सिर्फ प्रिंट में। प्रिंट फंक्शन क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकता है,
तो जब वो आउटपुट आपको शो होता है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यूज़ सेपरेटेड होती हैं विद अ स्पेस। तो आप चाहो तो उन वैल्यूज़ को किसी और कैरेक्टर से सेपरेट कर सकते हो इन दी आउटपुट। गॉट इट? Okay, let's try to run the right CSV first. Read CSV को अभी आप कमेंट आउट कर दो, राइट CSV को एग्जीक्यूट करो और फिर फाइल खोलो CSV फाइल। Okay, let's open our rf2.csv. It is right there. You can open Excel, go to File, Open, locate the directory in which you. सर मुझे कुछ आइडियली में करना है. For now, just you can just pay attention to what we are doing. अब अभी रुक जाओ, ठीक है? Okay, so just open. अब इसको थोड़ा या मैक्सिमाइज कर लीजिए. ग्रेट. So now Arav, Gaurang, tell me what you can see in your file. Just don't select anything. Just don't select anything. सर रोल नंबर एंड नेम्स. आरव पहले वाले सेल पे क्लिक कर दो या फिर मतलब कुछ भी सिलेक्ट मत करो. ये जो आपने एफ को सिलेक्ट कर लिया है ना, ये थोड़ा दिक्कत करेगा. जस्ट सेलेक्ट फर्स्ट सेल ओनली जहाँ पे रोल नंबर लिखा है. मत करो ये भी पूरा सिलेक्ट मत. चलो छोड़ो. जस्ट फोकस ऑन द फाइल और देखो इस फाइल में और दूसरी जो RF CSV हमने बनाई थी उसमें और इसमें क्या फ़र्क है. कुछ समझ में आ रहा है आपको? नोटपैड में खोल के देख सकते हो आप. आई नो यू माइट बी क्यूरियस कि एक बार नोटपैड में खोल के देखें क्या @ आया है क्या. यू कैन जस्ट ओपन इट इन नोटपैड एंड वेरीफाई. सर तो डिलिमिटर का फंक्शन क्या रहेगा, क्योंकि जब हमने कॉमा डाल दिया तो वो अलग लिस्ट, वो अलग अलग उसमें डाल रहा था बॉक्सेस में, बट अब हमने जब वैल्यू डाली है तो वो कॉमा की जगह सेपरेट कर रहा है और सेम बॉक्स के अंदर डाल रहा है, तो उसकी वैल्यू तो कुछ हुआ नहीं, वो सिंबल की तरह एक्ट कर रहा है, कैरेक्टर की तरह. यस यस वेरी गुड आरव. यू ट्राइड टू एक्सप्लेन इट. प्रिंट कर रहा है, यस नहीं यस. डाल रहा. सी मैंने आपको बताया था जो एक्सेल है इट इज़ प्रोग्राम्ड इन सच अ वे इफ़ you have certain or some set of values जो कॉमा से सेपरेटेड हैं, तो भाई उसको अच्छे से पढ़नी आती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़. कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं तो उठा के उन वैल्यूज़ को एक एक सेल में फेंक देगा वो. ठीक है. लेकिन इस बार वो फंस गया. इस बार CSV तो बना दिया आपने लेकिन डीलिमिटर वहाँ पे पास किया हुआ था @ तो वो भाई कंफ्यूज हो गया. एक्सेल गॉट परप्लेक्स्ड. उसने आपको एक सेल के अंदर ही वैल्यूज़ दे दी. जैसे मतलब जो फर्स्ट आपकी रो रही होगी वो फर्स्ट. आप just show me that rf2.csv. I'm not interested in rf.csv anymore. Yeah, I'm interested in this one for now. So पहली रो पहले सेल में डाल दी उसने क्योंकि उसको आता ही नहीं है @ को सेपरेट करना. आप समझ रहे हो. डीलिमिटर आपने पास किया था @ लेकिन एक तरीका ज़रूर आपको एक्सेल प्रोवाइड करके दे रहा है. आप चाहो तो इस डेटा को जो अभी आपके सामने है एक्सेल फाइल में उसको बता सकते हो कि भाई मैंने जो सेपरेटर पास किया था ना वो @ था, तो तू उस बेसिस पे इनको अलग अलग सेल्स में डाल दे. कैसे करेंगे वो. नाउ गो टू डेटा. आई मीन आई डोंट रिमेंबर द steps but we'll definitely reach out to that. Just go to data. Can you see in the menu bar at the top where you have file, home, insert? In your Excel only we are talking about. Page तो layout, सर मतलब कि हम यहाँ पे formulas. कर क्या रहे हैं. स्लो. Yeah, just wait, just try to look what we are doing. Can you see this text to columns?
Can you see this text to columns, Arav? There is an option in the middle. Just go to text to columns. What is it saying? सर वो पहले डेटा सिलेक्ट करने के लिए कह रहा था. हाँ, आप जाओ तो सही टेक्स्ट टू कॉलम्स पे. Yeah. So now just try to look at these things. See, जब आप प्रोग्रामिंग करते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका दिमाग होना चाहिए शांत. ठीक है. आप हड़बड़ी में चीज़ें करोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखने की बजाय थोड़ा आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे. तो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप, एंड जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करो, चाहे हमें वो चीज़ 4 बार करके देखनी है. ठीक है. जल्दी जल्दी हड़बड़ी नहीं करनी है आप दोनों को. ठीक है. नाउ ईच एंड एवरीथिंग, each and every step that we are doing is leading us to something new. ठीक है. So now you can check what does it have to say. ये कह रहा है कि choose the file type that best describes your data. Delimited, characters such as commas or tabs separate each field, or fixed with. तो भाई मैंने तो अपना डेटा ना इसी हिसाब से प्रोसेस करना है कि मैंने डीलिमिटर मैंने यूज़ किया है, तो ये ऑप्शन ठीक है, डीलिमिटेड. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट. नाउ यू कैन सी प्रीव्यू ऑफ सेलेक्टेड डेटा भी वो आपको बता रहा है. अगर ये नहीं होगा तो वील जस्ट सेलेक्ट दी एंटायर थिंग. नाउ गो टू अदर. ना तो मेरे पास सेमीकोलन है, ना कॉमा है, ना स्पेस है. अभी अदर पे जाके आप @ लिख दो. अदर को चेक करो. Now go to next. Now just see आपका जो रोल नंबर @name @marks अभी तक लिखा हुआ था ना, वो एकदम से अलग अलग कॉलम में आ गया है. तो आप देखो, दिस स्क्रीन लेट्स यू सेट द डीलिमिटर्स योर डेटा कंटेन्स. यू कैन सी हाउ योर टेक्स्ट इज अफेक्टेड इन द प्रीव्यू बिलो. ठीक है. तो ये जो स्क्रीन है ये आपको हेल्प करती है सेट करने में डीलिमिटर, कि भाई अगर आपने कोई स्पेशल डीलिमिटर यूज़ किया है, भाई यू आर सो एडवांस्ड. दैट मीन्स आप कोई स्पेशल बंदे हो यहाँ पे जो एक्सेल पे काम करने आए हो. तो मैं आपको ये ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप अपना डीलिमिटर चूज़ करो, और जैसे आप डेटा देखना चाहते हो एक्सेल के अंदर आपको वैसा ही मिल जाएगा. ठीक है. मैं कैसे देखता हूँ डेटा? बेसिक कॉलम्स की फॉर्म में, हर वैल्यू एक एक्सेल में. तो प्रीव्यू भी दे दिया, जैसे आपने @ पास किया ना अदर में. तो वो जो टैब पे टिक लगा हुआ है आ रहा है, उसको एक बार हटा दो आप. टैब पे भी टिक लगा हुआ है ना, उसको जस्ट अनचेक. या नाउ गो टू नेक्स्ट. इट विल आस्क यू फॉर, आई बिलीव, इन द सेम शीट, और वेट, सेलेक्ट ईच कॉलम एंड सेट द. या इसमें हमें कुछ नहीं करना है. वी डोंट हैव टू. हाँ, फिनिश करो एक बार. या सिमिलरली यू कैन प्रोसेस दी अदर टू. सिमिलरली यू कैन प्रोसेस दी अदर 2 रोज. ठीक है. सेलेक्ट कर लो उनको. आप दोनों को सेलेक्ट कर सकते हो वो भी, मतलब एक साथ सेलेक्ट कर सकते थे, बट एनी वे नो प्रॉब्लम. ऐसे ही थर्ड वाला कर लो. Okay, great. So CSV helped us to actually understand the working of Excel as well. Wasn't it interesting, guys? सर बट अच्छा हाँ सर, बट फिर डीलिमिटर का फंक्शन क्या होता है? मतलब हम एक्सेल से तो ठीक कर ही सकते हैं ना, तो कॉमा और @ लगाए तो फर्क पड़ेगा ही नहीं. हाँ, सी देखो, ऐसा है कि मान लो आपका कोई डेटा आया, ऊपर से पीछे से कोई डेटा आया. आरव, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. नाउ कभी कभी क्या होता है, वेन एवर वी ट्राई टू स्क्रैप द डेटा फ्रॉम इंटरनेट ना आरव, कभी कभी डेटा जब हम टेक्स्ट में ओपन करते हैं तो उसमें डीलिमिटर ना एक स्पेशल आ जाता है.
अब मान लो वो सेम डेटा आपको चाहिए था एक्सेल में, कॉमा तो उसमें नहीं है ना, तो दिस इज द वे आउट कि जिसकी मदद से आप उसको एक्सेल में, एक्सेल के वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो. यू अंडरस्टूड? दैट्स वाई प्रोग्रामिंग, वी डिड इट थ्रू प्रोग्रामिंग, जिससे हम समझ सकें कि ऐसा भी डेटा बन सकता है यार. ठीक है ना, ऐसा भी डेटा बन सकता है जहाँ पे डीलिमिटर में कुछ कुछ स्पेशल तरीके का बना दूँ, और उसको जब मैं एक्सेल में इंपोर्ट करूँ ना, तो वो इस तरीके से दिखाई देगा. फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, यार ये तो एक्सेल वाले वे में ही नहीं है. लेकिन कोई बात नहीं, आपने देखा कि एक्सेल विल हेल्प यू टू सॉर्ट दैट डेटा द वे यू वांट टू सी इट इन एक्सेल. You understood? Yes, sir. Okay. That is why this is coding. That is why this is programming. कि यहाँ पे आप डेटा को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके उसकी एक्चुअल फॉर्म में लेके आ सकते हो. आपने डीलिमिटर यहाँ पे चेंज किया, चेंज करने से आपने पूछा ना व्हाट इज इट्स फंक्शन. फंक्शन ये हुआ कि आपने जिस वे में वो एक्सेल में खुलना चाहिए था वो रोक दिया. You abandoned the actual view it should have in MS Excel. आपने वो चीज़ रोक दी. अब दैट इज़ ग्रेट, बट एक्सेल भी आपको कुछ एक वे प्रोवाइड कर रहा है उस चीज़ को दोबारा से सॉर्ट आउट करने का. Isn't it awesome? Yes, sir. So this is the way where we can develop different type of applications. Suppose you are an IT specialist somewhere. Now what happens is, let me tell you about one incident. What happens is हर साल 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आता है. I won't get into the nitties and gritties of this topic, but मैं थोड़ा सा आपको समझा सकता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जो भी CBSE से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो एक IT जो भी हेड होता है आपके स्कूल में उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. पीपल लाइक अस. ठीक है, तो 10th और 12th का जब रिज़ल्ट आता है वेबसाइट से, या फिर CBSE उसको आपके ईमेल पे ड्रॉप करता है फाइल को, तो वो एक टेक्स्ट फाइल ड्रॉप करता है और उसमें डेटा बहुत ही ब्लंडर वे में होता है. उसको आप एक्सेल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो. तो ये जो टेक्स्ट टू कॉलम्स वाला कॉन्सेप्ट हमने आज देखा, इसी का इस्तेमाल करके हम डेटा को वहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं कि जिससे हम उस डेटा को एक्सेल में पढ़ पाएँ. अब ये चीज़ कोई ऐसा इंडिविजुअल है हु इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द IT बैकग्राउंड, उसको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी. बट द person who is an IT specialist who has some knowledge of programming and how these things work, वो actually अपनी knowledge को apply करके डेटा को उसकी सही फॉर्म में लेके आ सकता है. Yes, Gaurang, you are saying something? सर मतलब कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मतलब कि जैसे हम मतलब कि एक मैसेज मतलब कि वेव्स में जा रहे हैं और वहाँ पे एक कलेक्टर बैठा है. कैसे मतलब? तो वो जो कलेक्टर जो होएगा वो उस मैसेज को लेके और उसको डिकोड करके उसको मतलब कि जैसे उसको समझना है, जिसको समझाना है वो समझा सकता है. तो वहाँ पे जो डिकोडर है उसको हम यहाँ पे जो हमने ये सब करा है वो हो सकता है ये. हाँ, आप इस तरीके से इसको कह सकते हो, लेकिन अगर इसको आसान शब्दों में समझा जाए तो ये क्या था कि CSV की जब बात आती है ना गौरांग, तो वो एक्सेल से जुड़ी हुई चीज़ है, ये समझ लो. जहाँ भी आपको दिख रहा है, अच्छा CSV फाइल हमने पढ़ा था 12th क्लास में, ये तो एक्सेल फाइल्स ही होती है ना. हाँ, तो जो दूसरा पर्सन होगा वो समझ जाएगा कि भाई आपको वाकई में नॉलेज है प्रोग्रामिंग की. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, आप क्या कर सकते हो, आप CSV फाइल्स में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, उस डेटा को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जहाँ पे वैल्यूज कॉमा से सेपरेटेड नहीं थी. इसलिए हमने ये चीज़ समझी आज कि मान लो कोई एक ऐसी फाइल है जहाँ पे डीलिमिटर कॉमा नहीं है, तो उस फाइल को भी आप एक्सेल में अलग अलग सेल्स के अंदर खोल सकते हो. नाउ यू सॉ कि एक्सेल फेल्स एंड सेज दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद द डेटा अगर डीलिमिटर कॉमा नहीं है. ठीक है, लेकिन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वे आउट. आपने अभी देखा
ठीक है, आपने कोड करके तो डीलिमिटर सेट कर दिया था। यहाँ पे भी क्योंकि जो ये इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है एमएस एक्सेल का, ये भी तो प्रोग्रामिंग से ही बना है ना। तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया हुआ है यूज़र इंटरफेस के अंदर, टेक्स्ट टू कॉलम्स करके। इसके अंदर अगर आप डीलिमिटर स्पेसिफाई कर दो तो वो उसी तरीके से फिर पढ़ना शुरू कर देगा डेटा को, जैसे वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को पढ़ता है। चाहे भले ही वैल्यू सेपरेटेड थी एट द रेट सिंबल से, लेकिन क्योंकि आपने उसको बता दिया कि भाई डीलिमिटर ना एट द रेट है, तो अपनी तरह ही काम कर। ठीक है ना, जैसे तू करता है वैसे ही कर। जैसे तू अगर फाइल को पढ़ता है और उसमें कॉमास पड़े हों तो उनको तू अलग अलग सेल्स में डाल देता है ना। यहाँ पे इस फाइल के अंदर एट द रेट पड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं तुझे बता रहा हूँ कि एट द रेट से सेपरेटेड है, तो अपना वही लॉजिक लगा कि एट द रेट से वैल्यू सेपरेटेड है और उनको अलग अलग सेल्स में डाल दे। समझे आप? आरव, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, ग्रेट। तो सर एक या सुनकर हो रहा मैं, तो डीलिमिटर एक जनरल टर्म हो गई प्रोग्रामिंग में कि सीएसवी द डीलिमिटर फाइल। delimited, yes, you can say that, Arav, very good. You can, it's not a delimiter file, it's a delimited file, and the delimiter that we use in CSV is a comma by default. Now if you want you can change it, and then also can represent the data in the Excel. You got it, Arav? Yes sir, yes. Awesome. Now let's try to do a quick question. Let me put it in chat for you. Give me 1 minute, okay? I need to log in with my mobile phone and then try to put the question in chat because it's a long question. So basically, we have uh, understood how to read and write data in CSV. Goran, on Sunday we'll be revising the concept. So on Sunday it'll be your turn to share the screen and do all the codes. Definitely we'll be revising the program in form of uh, we'll do the codes in form of questions only. It will be a kind of a test for both of you. Okay, ओके सर। just wait, I'm just logging in via MS Teams on mobile phone. Just wait. See, guys, try to learn these concepts from an approach that next year you are going to sit in BTech Computer Science Engineering. Okay, so from that point of view, study this subject. I'm telling you, you both are capable of doing that engineering, and since you know it has good, future aspects for you, so I would like both of you to go for it. Doesn't matter in which university you are going. There are options available beyond JE as well. Okay, although JE is like the basic thing that you need, but still, in case you fall short of not cracking into IITs or NITs, you can still have a good chance to study good course like BTech Computer Science. So from that aspect, you study this. It will be a great help for you going abroad. Okay, abroad as तो in, सर मतलब कि हाँ जी. जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस के अंदर हम यही पढ़ते हैं जो 11th 12th में पढ़ाते हैं। It will definitely see, Gorang, you will definitely not study only this. There will be an extension to these topics, but I'm telling you, there will be students sitting next to you who won't have even a basic knowledge of what programming language is. Okay, you just forget about writing codes. ठीक है, तो आपके पास तो एक एज होगी ना वहाँ पे, आपको तो अच्छे से पढ़ाई गई हैं चीज़ें, आपको तो अच्छे से आती हैं, तो यू विल आउट परफॉर्म अदर्स. You getting my point? What I'm saying? I mean, what sort of permissions it's asking for? Wait. Okay.
I have already given access to, okay. Okay, I'm in. Let me just put the question. Where is the chat? Just see if you found the question, guys. Arav, Arav, I would like you to just copy the entire thing I've pasted in the chat to a new file, new script actually, and then let's code what we have. Although we'll not be able to finish the entire thing today, but at least we can have a basic understanding, and you can try these two functions at your end so that in next class we are ready to, you know, do the thing. Just read the question, guys, and then I'll ask you what we have to do, okay? Okay, so we have to write a program in Python that defines and calls the following UDFs, basically user defined functions. Arav, make a new file and name it as CSV practice.py. Okay, I've sent the name as well in the chat for you. CSV practice.py. Paste your questions there in form of multi-line comments, just like you are doing right now. Great. So we have to basically define two functions. The first one is courier add function. It takes the values from the user and adds the details to a CSV file. The name of the file is given in the question itself. The name is courier.csv. Gorang, open your webcam. Each record consists of a list with field elements as CID, basically, which is customer ID, sender name, source, destination. These are the things that you have to basically put into your CSV file. Just read along with me to understand how to read the question and interpret what you have to do. Okay, so this is the first function, guys, where you have to define a function. The name is given courier add, courier underscore add function. इस फंक्शन की मदद से आप कुछ चीज़ें CSV फाइल के अंदर राइट करोगे. फर्स्ट इज कस्टमर आईडी, देन सेंडर नेम, सोर्स, destination. चार चीज़ें basically you have to put into the CSV file. Then you have a read function basically which will perform the operation of reading the file only, which is courier underscore search. Okay, it takes the destination as the input. ठीक है, now and displays all the courier records going to that destination. तो basically ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है सपोज गौरांग ने एक फाइल बनाई courier.csv. गौरांग, let's say, just tell me the name of any courier agencies which are there. क्या सर? Just tell me the name of any courier agency which is available, like DHL Express. Blue Dart. Yeah, Blue Dart. Blue Dart. Okay, Blue Dart. Let's take that. So Gorang is an employee or a manager in Blue Dart, and he's trying to handle the operation. So courier.csv उसने एक फाइल बनाई अपने local database के अंदर, database as in like the system machine that he is using. So courier.csv बनाई, उसमें उसने ना 4 रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, 4 हेडर्स बनाए हुए हैं कॉलम के.
CID, S नेम, सोर्स और डेस्टिनेशन। पहला उसने रिकॉर्ड डाला आरव, कस्टमर आईडी दी C01 और एनी आईडी लाइक you wanna give. You can also give a ID as 1. Okay, C01 सेंडर का नाम है आरव, सोर्स है दिल्ली, डेस्टिनेशन है चंडीगढ़। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। नाउ अब क्या करना है, गौरांग एक प्रोग्रामर है, मतलब मैनेजर के साथ साथ उसको प्रोग्रामिंग स्किल्स भी आती हैं। ठीक है, तो भाई फाइल ना बहुत लंबी है, उसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। गौरांग को क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर बंदे का ना कुरियर से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए उसको। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो डेस्टिनेशन लेगा एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, उसको वो सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं जहाँ पे डेस्टिनेशन चंडीगढ़ है, लेट्स सपोज। ठीक है ना, गौरांग ने डाला इनपुट एंटर द नेम ऑफ डेस्टिनेशन, तो शेल के ऊपर जब ये चीज़ आएगी उसने डाला चंडीगढ़, तो जितने भी कुरियर्स चंडीगढ़ डेस्टिनेशन के लिए डेस्टिन्ड होंगे ना, वो सारे डिस्प्ले होने चाहिए। तो प्रोग्राम ये पूछ रहा है, समझ में आया आप दोनों को? Arav, did you understand what we have to do in the code? Just सर explain. मैं खुद आज रीड कर रहा था तो Okay, just मैंने सिर्फ read. पहला पार्ट रीड। Okay, guys, just read both of you. I'll ask each one of you what we have to do, how we will do it, the basic layout of the code, and then we'll end the class. Okay? You can take time. Just take 1 minute to read and understand, and then let me know turn wise. I would like you to use all the knowledge you have. You can share the screen. Tell me, sir, हम ये functions बनाएंगे, इसमें मैं ये करूँगा, इसमें मैं ये करूँगा। ठीक है? सर कोरियर ऐड में तो हमें जो टेबल बनानी है उसमें हमें ये सारे जो फील्ड है उसको तो जैसे रो राइट डब्ल्यू राइटर कर कर लिस्ट के फॉर्म में डालना है जिससे फील्ड आ और फिर हमें इनपुट जितनी बार यूजर को इनपुट करना है, जैसे हमने इनपुट वाला फंक्शन अभी अभी बनाया था प्रोग्राम, उसमें ही अपने को बस CSS में बस ये लिखना है CID एस नेम और ये सारी चीजें मांगनी है इंस्टेड। और फिर कोरियर सर्च में रीड फंक्शन डिफाइन करते हुए हम एक लूप चला सकते हैं जिसमें हम इफ दिस इक्वल टू डेस्टिनेशन और फिर हम वो वाली टैबुलर को प्रिंट कर देंगे लिस्ट को। वो वाली क्या डिस्प्ले कर देंगे? डिटेल्स बेसिकली, राइट? Yes sir. Okay. Gorang, you were asking me something. Okay, Arav, great. Gorang, it's your turn now. सो मतलब कि कोरियर ऐड में तो हम मतलब कि कुछ मतलब कि एक लिस्ट के अंदर मतलब कि जो वो होएगा उसके अंदर हम किसी भी एम्प्लॉय या फिर उसका लेबर का नाम, सोर्स, वो कौन सी मतलब कि कौन से वहाँ पे काम करता है, डेस्टिनेशन, स्टोर आईडी वगैरह ऐड कर सकते हैं उसकी। और कोरियर सर्च के अंदर हम वो पर्टिकुलर आदमी की डिटेल्स निकाल सकते हैं या फिर जो हमको उसकी क्या क्या चीजें चाहिए उसको इनपुट करवा के यूजर से निकलवा सकते हैं। Okay, so Gaurang, how will you write courier search? In next class, you'll be writing courier search, and Arav is going to write courier ad live. Okay, so just do your homework. ठीक है? Is it okay, guys? Arav, you will be writing courier ad, and Gaurang will be writing courier search. This is the exact question that you can get in your board paper. Okay, once you practice these type of questions, it will be a piece of cake for you to tackle these questions in the board exam. Okay? सर Yes. कोरियर सर्च और ऐड दोनों की वो क्या कहते हैं, Definitions लिखनी है आपको। नहीं डेफिनेशंस नहीं सर, Yes. मतलब कि ये दोनों मतलब कि पहले से ही ऐसे नाम है
या फिर आपने जो समझाने के लिए कोरियर यूज करा है वो जैसे आपने ब्लू डॉट यूज करा था, मैंने बताया था आपको। नहीं 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 नहीं, ये वैसे ही है गौरांग, जैसे रीड CSV और राइट CSV लिखे थे ना आपने, ये वैसे ही यस आपको सर। लिखने हैं। कॉल करना है कुरियर ऐड, ऊपर होगी DEF स्पेस कुरियर ऐड कॉलन उसकी डेफिनेशन, फिर ऐसे ही कुरियर सर्च फंक्शन को कॉल करोगे, ऐसे ही DEF स्पेस कुरियर अंडरस्कोर सर्च फंक्शन आपको डिफाइन करना रहेगा, ठीक है? इज इट ओके सर आरव? यस आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो? यस यस, टेल मी। सर मेरे को ना अपनी एनसीईआरटी जो बुक है मेरे को श्योर नहीं है कि वो लेटेस्ट है कि पुरानी है। It is same for last 4-5 years, Gorang. Doesn't matter. नहीं सर, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे एक मिनट रुक जाओ। So, Arav, did you understand what you have to do? ये सर जो मैंने आपको बताया था सर वो सही था ना, मतलब Yes, आई गेस yes, कोरियर सर्च। absolutely. But just do a homework कि आप दोनों definitions लिख के आओ. Because courier search is not going to be that easy, okay? It is going to take some level of sophistication from your end. And Arav, I am telling you, if you start doing these type of questions, you will be great in programming, okay? I am telling you, if you can यस devote around 2 months extensive practice to file handling, na, your entire syllabus will be a piece of cake for you, Arav. You know, you at the beginning of the class, you were taking like you were concerned about the class 11 topics. They will be nothing in front of you if you can just master this one topic, file handling. Okay, because it accumulates all of the सर topics that you पूछ। have read in past, be it lists, be it dictionaries, be it tuples, be it fundamental concepts like functions. Okay, so it has the accumulation of everything. ये सर सब जो बोर्ड्स का सैंपल पेपर था उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स इसका ही था, फाइल हैंडलिंग का, Hmm. 12 से। Yep. डेटा स्ट्रक्चर इसमें भूल गया था, डेटा स्ट्रक्चर वाला टॉपिक। डेटा स्ट्रक्चर वाला टॉपिक में सिर्फ स्टैक्स है, स्टैक्स की भी हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, विल सी देम एज वेल, डोंट वरी। सो यस। इसमें सर आप, मैं एक बार चैप्टर्स बोल रहा हूँ, वो सारे एक बार बता देना कि वो है कि नहीं। I know it, Gorang. Just tell me what exactly you wanna ask. I know the सर book. उसमें कुछ टॉपिक्स नहीं गिवन है, that is the answer. सर इसमें 13 चैप्टर्स हैं टोटल। हाँ, तो उन 13 चैप्टर्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो नहीं गिवन है, जैसे आपका रिवीजन टूर एक यूनिट करके, मतलब यूनिट जो प्रोग्रामिंग वाली यूनिट है उसका कुछ पार्ट है 10 से 11 नंबर का, वो 11th क्लास का है पूरा, वो आपकी 11th की एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा कुछ भी, और फंक्शंस नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको इंटरफेस ऑफ पाइथन नहीं मिलेगा सीक्वल के साथ, ठीक है? ये कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग है, जैसे CSV आरव ने याद दिलाया, मैंने तो काफ़ी पहले वो चैप्टर देखा था एनसीईआरटी के अंदर। CSV इज़ नॉट देयर in NCERT, although it is an integral part of your syllabus in 12th class. Okay, so कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं। डेटा स्ट्रक्चर ऑल दो वहाँ पे है, अच्छा लेवल पे। आरव, यू कैन स्टडी डेटा स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट फ्रॉम NCERT, इट इज़ गुड देयर। ओके, सर डेटा कम्युनिकेशन नहीं 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 नहीं, ओके सर। डेटा स्ट्रक्चर स्टैक्स वाला जो पार्ट है, आप देखो गौरांग, आई डोंट रिमेम्बर द चैप्टर नेम, इट्स गिवन स्टैक्स इन द बुक। तो स्टैक्स आप एनसीईआरटी से पढ़ो, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। एक्सेप्शन हैंडलिंग यू कैन स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड आई वुड से यू कैन ऑल्सो स्टडी बाइनरी एंड टेक्स्ट फाइल फ्रॉम एनसीईआरटी, देयर इज नो हार्म इन इट बिकॉज द लैंग्वेज इज टू गुड। ओके सर, लेकिन इसमें है नहीं बाइनरी वगैरह फाइल्स। है आरव, बाइनरी इज देयर इन एनसीईआरटी, राइट? यस सर, बाइनरी है और टेक्स्ट भी है, और CSV का सिर्फ एक्सटेंशन का मेंशन था, वो है ही नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड SQL के लिए आप सिर्फ NCERT ही फॉलो करो, इट्स जेम व्हेन इट कम्स टू SQL। ओके, it cuts all of the crap which is there in reference books, and it gives you direct details to what is important, ठीक है? मैंने आपको बता दिया था, understanding data, it's worthless useless topic, so just don't pay attention to it much, ठीक है? उससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। सर आपसे मेरे को ना एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात करनी थी।
हाँ प्रोजेक्ट से रिलेटेड सी प्रोजेक्ट इज सी गौरांग कुछ टॉपिक्स हो जाएं एक बार उसके बाद तो हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि हमें ना अभी बेसिक आइडिया नहीं है फाइल हैंडलिंग का। हमें नहीं पता सीक्वल क्या है, इंटरफेस नहीं आता है बेसिकली, आपको नहीं आता है। आई नो दैट आरव के साथ मैंने नहीं क्लास सर, की है। यस सर मेरे को एक बात पूछनी है, जैसे आपको याद है मैंने एक बार वो मूवी बुकिंग सिस्टम आपको प्रोग्राम बना के दिया था वहाँ पे 11th में। हाँ हाँ इट विल तो वर्क। सर उसके अंदर मैम ने बोला है कि आप बस ना कोई से भी प्रोग्राम बना लो, उसमें बस पाइथन और उसकी माइस्क्यूएल की कनेक्टिविटी दिखा दो, वो आपका प्रोग्राम डन है। तो मैं वो कह रहा हूँ कि उसके अंदर पाइथन की कनेक्टिविटी दिखा दें माइस्क्यूएल से तो। हाँ आप दिखा सी गौरांग व्हेन आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम टेकिंग योर क्लास ना यू विल कोड एंटायर प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ माय आईज। डोंट टेक टेंशन ओके, regardless of your timeline. It should be in December. I don't know what they have to what they want to do, लेकिन आप अपना पूरा प्रोजेक्ट का प्रोग्राम मेरे सामने यहाँ पे कोड कर रहे होगे अगले महीने, ठीक है? यू गेटिंग इट? बिकॉज आई नो व्हाट काइंड ऑफ लेकिन सर क्वेश्चंस। मैम ने बोला कि मैम ने 30th तक बोला है बस। 30th कौन सा 30th? अक्टूबर? अक्टूबर। You tell you ask your ma'am please give me some time, I'm working on my project, let's see what she has to say. Okay, I'm not saying just that don't give it to her, but I would like you to work on it Gorang, if you're getting what I'm saying, ठीक है? क्वेश्चंस अच्छे खासे लेवल पे पूछे जाते हैं एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के अंदर, एंड आई डोंट वांट यू एज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स लैकिंग देयर। ओके तो सर मतलब कि पिछले लास्ट ईयर मिनिमम कितने मार्क्स गए थे? आई कैन नॉट टेल यू दैट गौरांग, मैं बता दूंगा आपको सही समय पे। मिनिमम मार्क्स विच वेंट लास्ट ईयर वाज 25, ठीक है? आउट ऑफ 30? यस, एंड 25 गेटिंग 25 आउट ऑफ 30 इज लाइक आपने प्रैक्टिकल काफी बकवास दिया है, ठीक है? यू आर नॉट एबल टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट आपका बिल्कुल वर्थलेस था, ठीक है? इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए गौरांग, ठीक है? यस सर। हाँ 5 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपकी परसेंटेज मायने रखती है, ठीक है? और आप अगर प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 नहीं स्कोर कर रहे हो मतलब आप, ठीक है, यू आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। क्योंकि पेपर में ना, आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन नॉट स्कोर 100 बट इट्स ऑलवेज टफ टू स्कोर 100 इन सी एस। द बेस्ट स्कोर विच यू कैन गेट इज 98 99, ठीक है? बट डेफिनेटली वी आर ट्राइंग फॉर 100 हियर, सो rest assured we'll try our best, be it project, be the topics. Okay Arav and Gorang, take care and just complete the homework. We'll carry on Saturday at 8, okay? And Gorang, please do not join the Yes, class sir. late. See you. Okay sir. Also we'll be doing binary file questions and then we'll be coming back to text files, ठीक है? थोड़ा सा रिवाइज करेंगे उसको, हमने काफ़ी पहले किया था वो टॉपिक। ओके okay, see you guys, bye bye, take care. Bye sir.